Shocker from West Bengal's Durgapur. A second-year student of a private medical college was allegedly dragged and gang-raped inside the hospital premises. According to her father, the incident occurred outside the private medical college campus in Durgapur when the girl went out for dinner with one of her friends. The medical student, who hails from Jaleshwar in Odisha, is currently undergoing treatment. Probe in the case is also underway. Both Durgapur and Balasore police are jointly investigating the case. Now, NCW takes suo motu cognizance in the matter. Meanwhile, the BJP has attacked the TMC-led West Bengal government, alleging a complete breakdown of law and order in the state and also claiming that women no longer feel safe in the state of West Bengal. Bengal leader of opposition, Shubhendu Adhikari, has slammed the TMC government, saying that criminals are thriving under its rule. The TMC, on the other hand, has vowed strict action against the culprits, while also urging the BJP not to politicize the incident. রাত্রি 10টার সময় কে ফোন করেছিল? তার বন্ধু আমাকে ফোন করেছিল যে আপনার মেয়েকে রেপ হয়েছে। তখন শুনে কান্নাকাটা করে এখানে পৌঁছেছি। এখানে 9:30 9টার মধ্যে একজন ছেলে, ওদের নামটা কি ওয়াসিম খান নাকি ওয়াসওয়ালিয়া, ও বলল গুপচুপ খাবো, চলো দেখি সেদিকে ভুলে ওকে নিয়ে গেছে। কোন দিকে? আপনার গেট কাছে। আচ্ছা, তো গেট কাছে নিয়ে গেছে। আমরা তারপরে ও কি দুজন না তিনজন লোক এসে, যখন তিনজন লোক এসে গেছে, ও ছাড়িয়ে সেখানে ওকে পালিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একজন ওকে রেপ করেছে। সিস্টেম কিছু নাই, নো রেসপন্স। একটা গার্ডিয়ান আসছে, অত বড় করে সংবেদনশীল ঘটনা ঘটেছে, একটু রেসপন্স থাকতো, কিছু না ভাই। যাও আমার ভাইগুলো এসে একটু হেল্প করেছে। ये हो रहा है ममता बनर्जी और उनका पुलिस और जो तुष्टिकरण का राजनीति, इसलिए ये सब कर रहा है। यहाँ घुसपैठिया, लुम्पेन, हुलीगन, ये सब लोग ये सब काम कर रहा है। एक भी पनिशमेंट ममता बनर्जी का रिजिम में नहीं हुआ। इसलिए इस तरीके से जो इंसिडेंट डेली हो रहा है, कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। ममता हटाओ, बेटी बचाओ। आपने विशेष समुदाय की बात की, क्या लगता है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है? ओबियसली कालियागंज का जावेद, मटीगढ़ा का साद्दाम, एवरीवेयर दे डिड दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट, हॉरिबल, पेनफुल इंसिडेंट, बार्बारिक इंसिडेंट। It is shocking, it is sad that slowly and silently India is becoming no place for women, and West Bengal particularly is becoming a place where a situation is arising where women are certainly not feeling safe. It is sad that a medical student from Odisha has been gang raped, and that too in a time when she has gone for her studies. It is sad indeed that it is the second such serious and heinous incident which should not have happened. लेकिन सबसे चिंताजनक विषय ये है कि वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री एक महिला है। वो महिला होने के बावजूद महिला हिंसा में जो संपृक्त है, उनका विरोध में जो कड़ी कार्रवाई लेना चाहिए, ले नहीं रहे हैं। उड़ीसा की सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने इसका ऊपर गहरा दुख प्रकट भी किए हैं, निंदा किए हैं। Another horrific incident of campus crime shakes West Bengal, this time in Durgapur. A young medical student from Odisha was allegedly raped just steps from her college gate. As police scramble and protests erupt, old wounds from the past campus assaults reopen. Take a look at this report. Another chilling incident of rape has rocked West Bengal, and this time it's the state's industrial hub, Durgapur. A second-year medical student was allegedly dragged and raped near a college campus late Friday evening. The survivor, originally from Odisha, was reportedly attacked while stepping out with a male friend. তার বন্ধু আমাকে ফোন করেছিল যে আপনার মেয়েকে রেপ হয়েছে।
তখন শুনে কান্নাকাটা করে এখানে পৌঁছেছি। এখানে 9:30-9টার মধ্যে একজন ছেলে, ওদের নামটা কি ওয়াসিম খান নাকি ওয়াসওয়ালিয়া, ও বললো গুপচুপ খাওয়া, চলো দেখি সেদিকে ভুলে ওকে নিয়ে গেছে। যখন 3জন লোক এসে গেছে, ও ছাড়িয়ে সেখানে ওকে পালিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একজন ওকে রেপ করেছে। সিস্টেম কিছু নাই, নো রেসপন্স। The young student was immediately admitted for medical examination, while police launched an investigation, questioning college staff and the friend who accompanied her. Durgapur and Balasore police will jointly probe the case now. ये सब जो इसका प्रोटेक्ट करने का क्षमता नहीं है, इसको पूरा दाय अपने घर सिर पे लेके अपने चेयर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये लोग इतना लोभी है, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। Anger and grief erupted in Durgapur as students, activists and citizens took to the streets demanding justice for the young medical student. पश्चिम बंगाल में कहीं पे कोई भी जगह में कोई सेफ नहीं है लड़की, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो लीडर ऑफ अपोजिशन वो इंटरफेयर करे और ये केस में हम लोग को सहायता करे। As the probe unfolds, the state government is facing sharp criticism. BJP has slammed the Mamata Banerjee government for what it calls the repeated failure of law and order in West Bengal. ये हो रहा है ममता बनर्जी और उनका पुलिस, और जो तुष्टीकरण का राजनीति, इसलिए ये सब कर रहा है। यहाँ घुसपैठिया, लुम्पेन, हुलीगन, ये सब लोग ये सब काम कर रहा है। एक भी पनिशमेंट ममता बनर्जी का रिजिम में नहीं हुआ। Facing sharp criticism from the opposition, West Bengal's ruling TMC has strongly rejected politicization of this sensitive case. Unfortunately, BJP always views such incidents through a political lens, which is most unwarranted. And we do not want to reiterate that Calcutta is also one of the safest metropolis in all over India. From the brutal tragedy at RG Kar Medical College to the horror in South Calcutta Law College, and now this alleged assault in Durgapur. Young women betrayed, dreams left shattered, and a state still grappling with its failure to ensure safety on campuses. The question remains, when will justice and security become more than just words for the daughters of Bengal? With Anirban Sinha Roy, Bureau Report, India Today.